Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in French Revolution, and the topic is socio-economic condition of France. What condition of France who led the French Revolution? First, a severe winter bad harvest led to rise in the bread prices. And a severe winter in France, ultimately the result of this bad harvest and the result of this increase the prices of bread. That is the primary causes. Severe winter in France, bad harvest, and result of this increase the prices of bread. Now, supplies hoarded. It means traders hoarded the food grains, and after spending hours in a long queue, and a consumer a long queue to purchase food grain. Ultimately, angry women stormed in the shops. Why? Because of that, for they wait for a long queue. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris announced a state of alarm. It means state emergency. King ordered his troop to move into the city. King ordered his army to control the city of Paris. And the rumors followed in entire France and Paris that he would soon order the army to open fire upon the citizens. There was a rumor spread in Paris that Louis XVI ordered his troops to open fire upon the citizens of France. Some men and women in thousands gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia. It means people decided to form his own army, and they declared, and the shape of this army is people's militia, gathered in a town hall and declared as a people's militia. A group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. Bastille was a prison and situated in the eastern part of the city of Paris, and a group of several hundred people marched towards the Bastille fort, that was a prison. Now, in the armed fight, the commander of Bastille was killed and the prisoners released, and the result is crowd attacked on Bastille fort, and in this attack commander of Bastille was killed and the prisoners released. Since the Bastille stood for the despotic power of the king, so Bastille stood against the despotic ruler of France, Louis XVI. It means Bastille was the symbol of against the despotic ruler of France. It means Bastille used as a symbol of revolution. It led people towards the success of French Revolution. It means after the incident of Bastille Fort led to the success of French Revolution. It means this incident led the success of French revolutions. Why? Because of that, these are the socio-economic condition in France where severe winter found, and due to this bad harvest and ultimately result of this led to the increase the prices of bread. It means supplies hoarded by the traders, and after spending hours in a long queue, crowd angry. Why? Because of that,
They wait in a long queue. Women stormed in shop on the morning of 14th July 1789. The city of Paris was in a state alarm, and the king ordered his troops to move the city. And the rumors spread entire the city that army to open fire upon the citizens. Some men and women in thousands gathered in the front of town hall, and they declared themselves as the people's militia. It means people's army. A group of several hundred people marched towards the eastern part of the city where situated Bastille prison. They attacked. In this attack, the killed commander of Bastille killed, and prisoners released by angry crowd. Since the Bastille stood for the despotic rule of the king, it means Bastille stood against the despotic ruler of France, Louis XVI. It led the people towards the success of French Revolution. It means the incident of Bastille Fort, demolition of Bastille Fort, led to the success of French Revolution in France. Now, आज हमने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस एक नया टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट किया था। सीवर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी फ्रांस में, जिससे फसल खराब हो गई और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो बढ़ गई। लोग लंबी लंबी कतार में ब्रेड को, रोटी को लेने के लिए वेट करने लगे। इससे जो भीड़ थी वो क्रोधित हो गई और उसमें से वुमेन्स ने दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग को पेरिस शहर में स्टेट इमरजेंसी अनाउंस होती है और लुई 16 ऑर्डर करता है ट्रूप्स को पेरिस में मूव करने के लिए। और रूमर्स ये फैल जाता है पूरे पेरिस में कि किंग अपनी आर्मी को पब्लिक के ऊपर फायर करने के लिए ऑर्डर कर दिया है। कुछ मेन और वुमेन गैदर्ड होते हैं इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल और वो अपने को पीपल्स मिलिशिया यानी एक तरीके से पब्लिक की आर्मी डिक्लेयर करते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट, और ये सारे लोग मिलकर मार्च करते हैं ईस्टर्न पार्ट पर जहां पर बेस्टाइल फोर्ट सिचुएटेड रहता है। ये एक प्रिजन था जिसमें कैदी रखे जाते हैं, एक तरीके की जेल थी जिसमें कैदियों को रखा जाता था। भीड़ ने उस पर अटैक किया, उस बेस्टाइल फोर्ट पर, और इस फाइट में कमांडर जो है बेस्टाइल का वो मारा गया और जो प्रिजनर्स थे उन्हें छुड़ा लिया गया। तो एक तरीके से बेस्टाइल जो है खड़ा होता है, बेस्टाइल का जो डेमोलिशन है वो एक तरीके से डिस्पोटिक रूलर ऑफ किंग के अगेंस्ट खड़ा होता है। और इस इंसिडेंट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि लोगों ने अपने राइट्स के लिए आगे आकर मूवमेंट शुरू किया है और यही सक्सेस का रीजन बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। तो ये था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस कि किस तरीके की कंडीशन वहाँ जनरेट होती है जिससे पब्लिक को दिक्कत होती है और अल्टीमेटली पब्लिक जो है डिस्पेटिक रूलर्स के अगेंस्ट यूनाइट होती है। क्योंकि फ्रांस में एक ऐसी कंडीशन जनरेट हुई कि जब लोग लाइन में खड़े होकर ब्रेड ले रहे थे तो वहाँ की महारानी जाते टाइम अपने जो सोल्जर्स थे उनसे पूछा कि लोग इतने लाइन में क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि रोटी के लिए, रोटी से अच्छा है कि वो केक खाएं। ये चीज़ें ये बताता है कि वहाँ का जो रूलर्स था उनको पब्लिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रेड की प्राइस और केक की प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, ब्रेड किससे बन रहा है और केक किससे बन रहा है, इनके बीच में कोई डिफरेंस उनको ये पता नहीं था। तो ये बताता है कहीं ना कहीं वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में रॉयल फैमिली के मेंबर्स को कुछ भी नॉलेज नहीं था। अल्टीमेटली पब्लिक को ये लगा कि लुई 16 उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकता है, तो पब्लिक ने उसके इस डेस्पोटिक रूल्स के अगेंस्ट में अपना एक पीपल्स मिलिशिया, एक ग्रुप बनाया और
सिंबल बना वो बेस्टाइल फोर्ट का जो डेमोलिशन हुआ, जो बेस्टाइल फोर्ट को गिराया गया, वो एक तरीके का सिंबल बना कि लोग अपने राइट्स के लिए आगे आकर सक्सेस हो सकते हैं। और ये अल्टीमेटली ये इंसिडेंट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।